Hello students, today we are again going for the accounts session. So as you are aware, we have started the first chapter of our book, that is not for profit organization. Today we will go for the format of receipts and payment account. The first thing which I have yesterday told you, financial things go for the three, that is receipts and payment is the first, then you have to go for what, income and expenditure, and lastly we have to go for the balance sheet. This is the format of receipts and payment account. Today we will understand, firstly the important thing which we have to understand is the format, and this is the format of what, receipt and payment. So firstly, as you know, we have to make the column for receipt, then it is amount, then it is payment, and it is amount. Firstly, I will explain you the receipt side. As you are aware, the to balance brought down opening balance, the cash which we have left in the previous year comes in the receipt side as to balance brought down, and that is written as opening balance of cash and bank. लेट मी नरेट यू दिस थिंग इन द हिंदी ऑल्सो, कि जो भी हमारा पुराना बैलेंस होता है पिछले साल का, तो वो हम इस साल रिसिप्ट साइड में बिगिनिंग में ले लेते हैं. जो जितना भी कैश हमारा बच गया मार्च में, तो अप्रैल में उसको क्या ले लेंगे, एज अ कैश एंड बैंक बैलेंस. सो प्रीवियस ईयर बैलेंस इज कंसिडर्ड एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द न्यू ईयर. एज यू आर अवेयर कि हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ April. So that is taken in the receipt side of our cash and bank. Next, that is revenue receipts. We are having receipts and payments are divided into the two parts, that is revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts means the revenue which we get, profit which we have earned, from where we have earned the profit, that is revenue receipt. Revenue firstly is what, subscription, as most of the questions come from the clubs. क्लब के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बेस्ड मोस्टली बाय द क्लब, व्हाट द क्लब इज गोइंग टू गेट. तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारे स्कूल में अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो व्हाट द स्कूल इज गोइंग टू गेट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, एडमिशन फीस. सिमिलर इज द केस विद व्हाट, club members, that is what, that is known as subscription. It is the amount paid by the member of not-for-profit organization on periodical basis so that their membership remains alive. So that is the thing which the members have to pay every year. So subscription can be previous year, current year and next year. So we write everything separately. जितना भी हमारा पिछले साल का था सब्सक्रिप्शन, जो अभी इस साल आया दैट इज करंट ईयर, और जो कभी एडवांस में कोई भी देता है दैट इज द नेक्स्ट ईयर, जो हम एडवांस में लेते हैं, उन तीनों को ही हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन को. नेक्स्ट इज एंट्रेंस और एडमिशन फीस, द अमाउंट पेड बाय द न्यू मेंबर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग the organization. It is treated as a revenue receipt, that is the entrance और admission fees. जो भी वो पैसा दे देगा नया मेंबर, जब भी वो वहां एंटर करेगा, that is treated as the entrance और admission fees. Then comes journal donation. Journal donation तो तुम लोगों को पता ही है, donation can be of two types. What are those? Specific donation and journal donation. अगर कोई किसी पर्टिकुलर चीज के लिए पैसा देता है तो that is known as specific donation. और जब कोई देता है डोनेशन, सर आप इसको किसी में भी यूज करो, तो दैट इज नोन एज व्हाट, जर्नल डोनेशन. देन टू जर्नल ग्रांट, तो स्पेशली जो भी हमें गवर्नमेंट पैसा देता है उस कंपनी को, उस फर्म को, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में, दैट इज नोन एज ग्रांट. व्हाट इज दैट नोन एज, द जर्नल ग्रांट विच वी रिसीव मोस्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. Government gives this grant. Then to dividend, the things which we receive from what, shares, that is known as dividend. What is that known as, dividend. So this is the income which a organization, not for profit organization, is earning. Then
टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट जो भी उसका आता है दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. एंड देन टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड देन टू रिसिप्ट फ्रॉम शो. तो रिसिप्ट फ्रॉम शो जो भी है हमारे पास वो हमारा यहाँ पर आता है टू रिसिप्ट फ्रॉम शो. अगर हम किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके लिए हमने टिकट रखा है तो जो भी टिकट से हमारे पास पैसा आएगा तो दैट वी विल ट्रीट एज रिसिप्ट फ्रॉम शो. एंड देन नेक्स्ट इज द सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल. अगर हमारे पास कोई पुरानी चीजें हैं जिनको हम बेचते हैं तो वो पैसा जो भी आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रिसिप्ट. देन सेल ऑफ न्यूज़पेपर, जब भी हम न्यूज़पेपर परचेज करेंगे तो दैट विल बी पेमेंट, और जब हम उनको बेचेंगे दैट विल बी रिसिप्ट. एंड देन मिसलेनियस रिसिप्ट्स, छोटे छोटे चीजें जिससे भी हमें पैसे मिलते हैं तो जिनका कोई अकाउंट नहीं होता उनको हम बेचते हैं और उनसे पैसे आते हैं, दैट इज नोन एज मिसलेनियस रिसिप्ट्स. And these are all revenue receipts. Now we will come to the capital receipts. So receipts are divided into two. What are those? Revenue receipts and capital receipts. Now capital receipts are जो भी हमारा कैपिटल में जाता है, जो भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स. एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर द डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस. अगर हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन है तो वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स में. और अगर हमारा जनरल डोनेशन है तो वो कहाँ जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में. एंड देन लाइफ मेंबरशिप फीस, yesterday I have told you it is the amount received as one time subscription from the members. It is the amount received as one time subscription from the members. And then legacy, and legacy is the amount received or any valuable item received as per the will of the deceased person. अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और वो विल लिख लेता है कि ये पैसे इनको मिलने चाहिए, that is known as what? Legacy. And then it is the sale of fixed assets. ये fixed assets को बेचकर जितना भी पैसा हमें मिलता है वो हम कहाँ लिखते हैं? That we write in the capital receipts. So students, I think your concepts might be clear that receipts consist of what? Revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts always come in the income and capital receipts is always, they all come in the balance sheet in the liability side. Now we will move to the payment side. If a bank is having the bank overdraft, अगर कभी भी हमारा not for profit organization बैंक ओवरड्राफ्ट में चला गया तो सबसे पहले अमाउंट कहाँ पे आ जाएगा? It will be on the payment side. And then it is the revenue payment. Revenue payments means कि जितना भी तुम्हारे एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा, what is that? Revenue payment. ये सारा कहाँ लिखा जाएगा? एक्सपेंडिचर में. रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ लिखा जाएगा? इनकम में. सो रेवेन्यू जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो कौन से हैं? पोस्टेज एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयर्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन द शो. अभी मैंने कहा कि अगर हम कोई शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जितने भी पैसे हमें खर्च होंगी उनके टिकट बनाने में, वो खर्चा करने में, तो वो पेमेंट में आएगा. और जितना भी पैसे हम उस शो से लेंगे वो कहाँ आएगा? रिसिप्ट में. और जितना भी पैसा हमारा खर्च होगा वो कहाँ आएगा? पेमेंट में. अगर हमारे इंश्योरेंस हमारा बनता है नॉट फॉर प्रॉफिट का, वो कहाँ आएगा? पेमेंट में. देन मिसलेनियस पेमेंट, छोटे छोटे खर्चे जो भी हम करते हैं दैट विल कम इन मिसलेनियस पेमेंट. टैक्सेस, अगर हमारे पास कोई भी टैक्स हमें देना है तो दैट विल बी ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पेमेंट. एंड देन ऑडिट फीस, जो भी हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑडिट करता है तो उसका कहाँ आएगा? ऑडिट फीस में. एंड देन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी आप देखते हो कभी कभी वहां पर फंक्शंस में जो भी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी अवार्ड सेरेमनी होती है तो वहां प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, तो उसके लिए जो भी ट्रॉफीज खरीदी जाती है दैट इज ऑल्सो ए रेवेन्यू पेमेंट.
Then comes honorarium. What is honorarium? The word honorarium comes from, it is a token payment given in honor of the services rendered by a person. अगर कोई हमारे लिए कभी हमने किसी एक्सपर्ट को बुलाया 5-10 दिन के लिए, सर इनको कुछ चीज सिखा लीजिए, हम आपको पे करेंगे, तो जो टाइम बीइंग के लिए हम किसी को भी पेमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, honorarium. And then न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, जब भी हम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स परचेज करते हैं, इट इज अ रेवेन्यू पेमेंट. सिमिलरली जैसे रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट्स होता है, वैसे ही हमारे कैपिटल पेमेंट. तो कैपिटल पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, assets. Capital payment is a part of assets and capital receipt is a part of liability. Purchase of fixed assets, where it will come, this will come in the assets. Investment, where it will come, assets. Books, if we purchase the books, that is also a part of assets. And then it is the closing balance. Closing balance जितना भी कैश और बैंक का, जैसे ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट हमारा बराबर होता है, वैसे ही हमारा कैश और बैंक जो भी है, इन सब को अमाउंट को मिलाकर हमारा रिसिप्ट किसके बराबर आना चाहिए, इसका रिसिप्ट का टोटल और पेमेंट का टोटल हमारा बराबर होना चाहिए. सो टुडे आई हैव मेक you aware about the receipts and payment. So receipt is of two type, that is what, revenue receipts and capital receipts, and payments are distributed in the two, that is revenue payment and capital payment. And the balance of receipts should always be equal to the payment, then it will be tallied. So this is receipts and payment. Students, I hope you will maintain this receipts and payment account, format of receipts and payment account. If you are aware about every entries of receipts and payment, you can easily go through what, liabilities, the income and expenditure, liabilities and assets. So easily now you can go, revenue payment is a part of what, liability. Revenue receipt is part of what, it is the part of income. Capital receipt is the part of what, liability. Capital payment is the part of what, it is a payment of assets. So easily we can go for the assets and liabilities of the balance sheet, income and expenditure. So main is what, receipts and payments, and then we have to go through income and expenditure and then balance sheet. Thank you.